हेलो माय डियर चैनल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 2 फॉर द इनकम टैक्स एक्ट 2025। और आज का अपना टॉपिक होगा रेसिडेंस रूल। रेसिडेंस रूल काफी फेमस है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, जो 1961 में भी था उसको सेम इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। मैं आपके सामने बैर एक्ट खोल के रखा हूं और ये बैर एक्ट से मैं आपको एकदम बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोविजन समझा रहा हूं। If you are a student, it will help you in examinations. If you are not a student but you are practicing, it will help you to understand the concept. And if you already know the concept, it will help you to revise it, right? So Income Tax Act 2025, again section number 6, contains the residence rule of every individual, HUF, AOP, BOI, company, artificial juridical person, partnership firm. Everything is contained in one single section, number 6. So in section 6, first of all, we have to understand if an individual is a resident in India or not. How will you determine that? So there are two primarily conditions. First condition is if that individual will be considered to be a resident in India if he is staying for at least 182 days or more. अगर वो इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे कर रहा है एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर में, देन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इन दैट पर्टिकुलर टैक्स ईयर. Or if he is staying for 60 days or more in the current year, in the current tax year, and have stayed at least for 365 days or more cumulatively in the last 4 preceding previous years. I mean previous years means preceding the tax year. If current year is 2026-27, current tax year 26-27, then preceding this tax year 26-27, 22-23, 23-24, 24-25 and 25-26, you need to check whether you are staying for at least 365 days in the last 4 years and 60 days or more at least in the current year. So if any one of the condition is getting fulfilled, means that this individual is a resident. So condition number 1, 182 days or more stay. Condition number 2, 60 days stay in the current tax year and stayed for 365 days or more in the immediately preceding 4 tax years. So these are the two conditions anyone can be fulfilled. But let me tell you, the second condition of 60 days and last 4 years 365 days, in this particular condition two situations are outside the ambit. मतलब ये जो 60 days and 365 days वाला clause है, ये दो situations में applicable नहीं है. मतलब वहां पे खाली 182 डेज में ही आप रेसिडेंट माने जा सकते हैं. नंबर 1, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, अगर आप एक तरीके से इंडियन सिटीजन हो, अगर आप एक तरीके से इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया छोड़ रहे हो, यू आर एक्चुअली लीविंग इंडिया आइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और यू आर अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप leaving India for a voyage or for maybe for some work purpose. You are a crew member of an Indian ship, means you are a part of Indian Navy, or you are actually going outside India for the purpose of employment. Then this 60 days condition is not applicable in your case. Then आपके लिए खाली 182 days वाला condition जो है वो applicable होगा दोस्त. ठीक है. Second situation में if you are a Indian citizen or a person of Indian origin, if you are a इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, अभी तक अपने खाली इंडियन सिटीजन का बात की है, बट अब मैं और एक चीज जोड़ रहा हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन? हुज एंसेस्टर्स, हुज ग्रैंडफादर्स वर पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, राइट? यानी 1947 के पहले उनके कहीं ना कहीं कोई एंसेस्टर्स है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मींस दैट पर्सन विल आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी इंडियन ऑरिजिन. सो इफ आई एम एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड आई एम मेजॉरिटी टाइम स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, आई एम कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी पर्टिकुलर टैक्स ईयर. सो फॉर मी ऑल्सो this 60 days condition will not apply, right? 60 days condition will not apply for an Indian citizen or a person of Indian origin coming on a visit to India or who is going outside India for the purpose of employment or as a crew member. एकदम सेम टू सेम प्रोविजन है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी था, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है. बट यहां पे एक ट्विस्ट है. इफ द सेम पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन origin, if he is coming on a visit to India and if his income from Indian sources, income from Indian sources, matlab whatever income which is earning from India, if it exceeds 15 lakh rupees, I repeat, if his Indian sourced income exceeds at least 15 lakh rupees, he will be considered to be resident in India if he is staying for 120 days or more and last 4 years he is staying for 365 days. Means
if you are an Indian citizen, person of Indian origin, if your income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees, means that government will deem you to be a resident only if you are staying at least for 120 days or more and last 4 years 365 days. Means this 60 days condition will be replaced with 120 days only if your Indian sourced income is exceeding 15 lakhs. But if your Indian sourced income is less than 15 lakh, you will fall under subsection 4 and you may be a resident or you may not be a resident. Meaning very clear, you will be considered to be a resident on 120 days or more and last 4 years 365 days if you are an Indian citizen or person of Indian origin coming on a visit to India and your Indian sourced income exceeds 15 lakh rupees in that particular tax year. So this is a perfect situation of a residential status of an individual. That is either 182 days or 60 days and last 4 years 365 days. But the 60 days condition will not be applicable in two situations. Exception है 120 days for Indian citizen or PIO coming on a visit to India having income from Indian sources exceeding 15 lakh rupees. In that situation 120 or more पे ही and last 4 साल 365 में ही he will be considered to be a resident. Now guys, let me explain you the concept of deemed resident. Deemed means what? He is actually not staying for 182 or 60, but then also he will be deeming to be a resident, because if he is an Indian citizen, he is an individual Indian citizen, he will be deemed to be resident if he is not liable to tax in any other country outside India because of his domicile or residence or criteria of similar nature, because he is not staying for good number of days in other countries. Maybe he's traveling for 30-40 days in almost all countries, so he's not considered to be a resident in any of the countries. He's not liable to tax in any of the countries because he's actually not a resident in any of the countries. But he's an Indian citizen and is again criteria. Indian sourced income exceeds 15 lakh rupees. That's a basic criteria which the government thinks that should be a basic threshold to make a person a resident. So in this situation, if that individual citizen, if his total income is exceeding 15 lakh rupees other than foreign sources, means Indian sourced income exceeds 15 lakh rupees, and if he is Indian citizen individual and is not liable to tax in any other country, means he will be considered to be a deemed resident. उसको क्या माना जाएगा? उसको एक तरीके से deemed resident माना जाएगा दोस्त. लेकिन लेट मी टेल यू, इफ यू आर अ रेसिडेंट एज पर द नॉर्मल कंडीशंस, 182 है, 60 है, व्हाटएवर 120 है, whether deemed resident provision will apply in your case? No, deemed resident will not apply if you are a resident as per the normal age. So if you are a resident as per the normal case, then deemed resident will not apply. Deemed resident will only apply if you are not a resident as per the normal case, because the word deemed means what? जबरदस्ती आपको रेसिडेंट मानेंगे अगर आप रेसिडेंट नॉर्मल केस में नहीं हो तो. ठीक है. Similarly for HUF, what we will see, for partnership firm, for AOP, for BOI, what we will see, we'll simply see control and management. If it is fully outside India, then it is a non-resident. Else, if control and management is in India or partly in India, this particular HUF, AOP, everyone will be considered to be a resident. So control and management needs to be checked. What about company? Everything is same. 6(3) था कंपनी में 1961 में, 2025 में 6(10) है. कंपनी विल बी सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडियन टैक्स ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी बात नहीं हो रही है, इंडियन कंपनी की बात हो रही है जो इनकॉर्पोरेटेड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013. जो इनकॉर्पोरेटेड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956, दैट इज एन इंडियन कंपनी. सो इफ यू आर इंडियन कंपनी मींस यू आर अ रेसिडेंट, और यू are having your place of effective management in India. आपका place of effective management उस साल किधर है? इंडिया में है. And what do you mean by place of effective management? Where your key managerial decisions, commercial decisions, which is necessary for the conduct of the business of the company as a whole are in substance made. यानी management decision और commercial decisions कहाँ से लिया जा रहा है? If it is taken from India, means you are a resident in India, though you are not an Indian company. तो basically foreign companies के लिए या other than Indian companies के लिए, if their place of effective management is in India, means that that company is considered to be a resident in India. And every other person will be resident if their control and management is situated wholly or partly in India. Only if they're situated fully outside India, they will be a non-resident. Last and very, very important discussion about RNOR. Let me tell you,
who is a RNOR? Only first of all, let me tell you, individual or HUF can be ROR or RNOR. Resident, ordinary resident, or resident, not ordinary resident. Section 6, clause 13. What does section 6, clause 13 says? First of all, an individual will be considered to be RNOR in three broad parameters. Number one condition is based on stay. Stay means last 7 years, if they are staying 729 days or less. In last 7 years, they are staying for 729 days or less. Or they are at least non-resident in at least 9 years out of the last 10 years. Last 10 years mein they were non-resident. In 9 years, they were non-resident in at least 9 years. Or they were staying for at least 729 days or less. Not more than that in the last 7 years. तो लास्ट 10 साल भी चेक करना है और लास्ट 7 साल भी चेक करना है. तो लास्ट 7 साल में क्या थे? लास्ट 7 साल में वो 729 डेज और स्टे किए, या फिर लास्ट 10 इयर्स में वो कम से कम मैक्सिमम 9 इयर्स नॉन रेजिडेंट थे. तो either of this situation you will be definitely be considered to be RNOR. Either you are a non-resident in last 10 years out of 9 in last 10 years में 9 years non-resident or 729 years in the 7 years, you are a RNOR. Now in the case of a person of Indian origin and a citizen of India, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, याद है, 15 लाख से ऊपर अगर आपका टोटल इनकम है फ्रॉम इंडियन सोर्स, एंड you are a resident because you are staying for 120 or more and less than 182, then government will keep you in the classification of RNOR. मतलब आप डायरेक्टली किधर होंगे? RNOR होंगे. मतलब you are staying for 120 but less than 182 plus 4 years 365, then government will deem you straight away to be RNOR. You will be straight away what? You will be straight away RNOR if your Indian sourced income exceeds 15 लाख. मतलब सोचो, अगर आप 182 से ज्यादा रह ली ना, तो आप जरूरी नहीं RNOR होंगे. यहां पे एकदम क्लियर है आपको कितना रहना पड़ेगा. आपको कितना रहना पड़ेगा? मैक्सिमम 182 से कम, यानी 120 और मोर बट 182 से कम अगर आप स्टे किए हो एंड लास्ट 4 साल में 365 स्टे किए हो, तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली कंसिडर यू टू बी RNOR. आप क्या माने जाओगे गाइस? आप RNOR माने जाओगे. एंड लास्टली, इफ यू आर अ डीम रेसिडेंट, आपको जबरदस्ती रेसिडेंट बनवाया गया एज पर 6 सबसेक्शन 7, तो यहां पे डेफिनेटली यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ RNOR. तो RNOR के लिए 3 ब्रॉड पैरामीटर्स है. स्टे के हिसाब से 9 out of 10 previous years, 9 out of 10 last years, you are a non-resident. 729 days or less stayed in last 7 years. Citizen, Indian citizen और PIO के basis पे, if your total income from Indian sources exceeds 15 lakh and you were staying for 120 or more and less than 182 and last 4 years 365, you will be straight away RNOR. And lastly, if you are a deemed resident, again you will be set to be RNOR. ठीक है. तो गाइज, रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं आया इनकम टैक्स एक्ट 1961 वर्सेस 2025 में. ये सब सेक्शन नंबर्स थे जो कि खाली सिंप्लीफाई कर दिया गया. पहले एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, ये सब डालता था, अब इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर दिया है. बट ट्रस्ट में ये सब सेक्शन नंबर्स आपके एग्जाम के लिए भी कभी से भी रेलेवेंट नहीं थे सर. तो ये तो अपना इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से आपका रेसिडेंस रूल. उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए. एंड थर्ड वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.